सीड, सीड अगर हम डिफिनेशन करेंगे, सीड क्या है? बॉटनिकली, सीड इज स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट enclosed inside a seed coat. असल में सीड जो है, इट इज ripened and fertilized ovule of gymnospermic and angiospermic plants. अब मसला है, वाई सीड इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स? क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स इन द लेडर ऑफ एवोल्यूशन, in the evolution of plants, they are at the top, and both gymnosperms and angiosperms are called seed plants. Gymnosperms or gymnosperms and angiosperms together are called seed plants, or we together call them as spermatophytes. Spermatophytes. When we see the general classification, if I show the general classification for 1 minute, I will share with you a whiteboard. This is the whiteboard. We have plant प्लांट किंगडम डिवाइडेड एज, एक जनरल सी क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम में है। एक है क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस के बाद है फेनीरोगैमस, फेनीरोगैमस। क्रिप्टोगैमस में आते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस एंड नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। वीसी हो गया वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस में आते हैं ब्रायोफाइटस, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस में आते हैं टेरिडोफाइटस। फेनीरोगैमस में आते हैं दो ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, एक जिम्नोस्पर्म्स, एक एंजियोस्पर्म्स। इनको हम सीड प्लांट्स भी कहते हैं, बट सीड प्लांट्स बीइंग belonging to gymnosperms and angiosperms, लेकिन जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स एट द टॉप ऑफ एवोल्यूशन हैव seeds enclosed in ovary. So they are rightly called angiosperms. Angiosperms का मतलब ही है कि when we have seeds enclosed in ovary, we call them as angiosperms. Angios means vessel and sperm means seed. Vessel like structure में जब seed enclosed होते हैं, तो इनको हम that group of plants called angiosperms. So drawing here the evolutionary ladder, यहाँ पे हम पहले रखेंगे ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स, and after gymnosperms at the top we have angiosperms. Like in animal kingdom, we place mammals at the top, mammals at the top, and in the mammals human beings are at the climax. इसी तरह प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स आर एट द टॉप, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स हैव सो मेनी यूनिक फीचर्स by which way they differ from the rest of the plants. एंजियोस्पर्म्स में एक यूनिक फीचर यही है कि इनमें सीड्स होते हैं लाइक जिम्नोस्पर्म्स, लेकिन अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं दे आर नेक्ड, जबकि एंजियोस्पर्म्स में सीड्स आर एनक्लोज्ड इन आवरी। एंजियोस्पर्म्स में सीड्स आवरी में होते हैं एनक्लोज्ड। आवरी इज आवरी हमें बहुत दिनों से आवरी हमने पढ़ी। जो कार्पल है, कार्पल का बेसल स्वोलन पार्ट इज आवरी। इसमें आवरी में अंदर अव्यूल्स होते हैं, और जब हम अव्यूल की डिफिनीशन करते हैं, अव्यूल इन एंजियोस्पर्म्स इज इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंट्यूगमेंटेड megasporangium. This intugmented megasporangium forms the ovule. That is, in angiosperms we have usually two intugments. Most of the angiosperms में दो intugments होते हैं, and in the intugments, this is outer intugment, inner intugment, and there in the intugments is the tissue, general tissue, which we call nucleus, and in the nucleus there is the embryo sac, and that embryo sac contains the fertilized egg.
Though that fertilized egg develops into zygote, and that zygote develops into embryo, along with the central cell, which after fertilization with the second male gamete transforms into endosperm. This is the development of the seed. Now, a seed which is now a ripened ovule and contains a future plant which we call embryonic plant. That embryonic plant is enclosed in seed coat. Look here again. This is the outer integument. This is the inner integument. And in the integumentus, we have we have a general tissue. That is the nucellus. That is the nucellus. This whole this the structure enclosed by two integumentus. This is actually the megasuporangium. मेगास्पोरेंजियम इस मेगास्पोरेंजियम में अंदर एक मेगास्पोर हुआ करता था दैट मेगास्पोर हैज formed the embryo sac, and in that embryo sac there is now the female gamete that has been fertilized by the male gamete, and the central cell that has been fertilized by the second male gamete, and these after fertilization this whole structure transforms into a seed. The outer integument and inner integument, they form the seed coats. This kind of ovule, where we have two integuments, is called bitegmic ovule. इस ovule को हम bitegmic ovule कहते हैं. Now, a seed which is now a ripened ovule, that is this megasporangium, contained in two integuments, and whole structure has matured into the seed. This seed has now parts like embryo, endosperm, and seed coat. यहां तक आया समझ? Embryo, endosperm, and Seed coat. seed coat. Now, moving moving on, we can say that the structures of the seed, like we have the embryo, the endosperm, and the seed coat. What is embryo? Embryo is an undeveloped plant inside a seed. That is, it is the future plant. That when seed matures, that will become the future plant. That is, after the germination of this seed, this embryo will come out as future plant. And all seeds do not have same size, shape, and color. Seeds do differ in shape, size, color, etc. And for example, looking at the seeds of pea, gram, bean, they are having different shapes, different colors. Even in pea plant itself, peas, different varieties of pea produce different types of seeds. We have and embryos too in these seeds, they differ in shape, size, color. Plant embryos जो होते हैं in seeds, they have structures called cotyledons, and the cotyledon is the central portion of the seed embryo, to which epicotyle, the immature shoot, and the radicle, the immature roots are attached. ये हमें आगे समझ आएंगे when we study the seed in detail. एक सीड में जो एम्ब्रियो होता है, इन ए सीड इट हैज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोटिलेडॉन्स. अभी आप ऐसे ही याद रखो. एंड द कोटिलेडॉन जो है, इट इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सीड एम्ब्रियो, टू विच वी हैव एपिकोटाइल एंड वी हैव रेडिकल. एपिकोटाइल एपिकोटाइल जो है, एपिकोटाइल इफ यू सी द सीड, इस तरह हम सीड को देखेंगे. सीड में दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, इनके सब डाइकॉट्स, एंड जो अपर वाला पोर्शन अबव द कॉटिलेडॉन्स, that will constitute the epicotyl, and the level below the cotyledons, that is the hypocotyl. The hypocotyl elongates into radicle, and that radicle forms the future shoot,
while the epicotyle elongates into pallimule, and that pallimule forms the future shoot, and radical forms the future root. So, cotyledons being the important part of the seed, or with cotyledons, the embryo is attached. And embryo has important structures like it has cotyledons, it has hypocotyle, it has epicotyle, it has pallimule, it has radicle. Plants are classified based on the number of cotyledons. We can have two cotyledons, and if there are two cotyledons, that group of plants where in the seed there are two cotyledons are called dicotyledons, and the plant is shortly called dicot plant. And when there is only one cotyledon, the plants are called monocots, monocotyledonous plants. जो एंडोस्पर्म है सीड में, दैट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू that is produced in the seed of the most flowering plants, and depending कि एक सीड में एंडोस्पर्म होता है या नहीं होता है. सीड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. जो ये एंडोस्पर्म है, इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू which surrounds the embryo, and it provides the nutrition to the embryo in form of, it can have so many nutrients like in form of starch, lipids, etc. It can contain oils, it can contain protein as well. In case of maize, there is an storage layer that is called aleuron layer. Here, now, based on the type of this type and location of storage materials, यानी कौन से स्टोरेज मटेरियल सीड्स में होते हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव एंडोस्पर्मिक सीड्स. इनको हम एंडोस्पर्मिक सीड्स को एल्बुमिनस सीड्स भी कहते हैं. Endospermic seeds are also called albuminous seeds, and non-endospermic seeds are called ex-albuminous seeds. What are albuminous seeds? Endospermic seeds. These seeds have endosperm in mature seed, and it is the what is endosperm? It is fleshy, oily substance that surrounds the embryo, and it provides the food to the developing embryo. That is, it is the main substance which stores the food for the developing embryo. Inside the seed coat, a thin and papery cotyledon is also present. Monocots have Monocot plants are usually endospermic plants, and in them there is only single cotyledon. While in case of non-endospermic seeds, that is, these are those seeds जिनमें during development endosperm consume होता है, and they do not have endosperm in mature seed. The cotyledons in case of non-endospermic seeds, they are thick, they are fleshy, and they store the food. Because in non-endospermic seeds, endosperm does not persist, so the food is itself stored by the cotyledons. Dicot plants usually have non-endospermic seeds. Here is the bean seed. Bean seed एक dicotyledonous seed है. इसमें here we have two cotyledons. This is one cotyledon and this is another cotyledon. अगर आप bean seed को पानी में डालेंगे for some time और उसमें वो seed coat फिर बाहर निकलता है, and in that seed coat we have two cotyledons. These are the two cotyledons. This is outer, this is the seed coat, and in it there is the embryo, and over the embryo, to the embryo are attached the two cotyledons, and this is the epicotyle. And above the epicotyle there is the pallimule. That pallimule will later on form the future shoot. This is the corn seed or the maize seed. यहाँ पे ये this portion constitutes the embryo, and in the around the embryo there is the endosperm, because monocotyledonous plants usually store food in form of endosperm. यहाँ पर here it is the seed coat. अगर हम मेज सीड को एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंगे ऐसे, यहाँ पे एम्ब्रियो ऐसे दिखता है, और यहाँ पे या एम्ब्रियो में नीचे की तरफ वी हैव कोलेराइजा, एंड ऊपर है कॉलियोप्टाइल. कॉलियोप्टाइल के अंदर होते हैं फ्यूचर
शूट बड, एंड कोलोरेजा के अंदर होता है फ्यूचर रूट बड। एंड दिस रूट कोलोरेजा और रेडिकल के ऊपर जो कोलोरेजा होता है, दिस रेडिकल elongates to become the root, and this epicotyle elongates to form the shoot. So these are two seeds in comparison and contrast. That is, in monocotyledonous seed there is only one cotyledon, and in dicotyledonous seed there are two cotyledons. The bean seed is a typical example of the dicot seed, while corn seed or maize seed is the typical example of the monocot seed. Now, coming to the dispersal of seeds. What is meant by dispersal of seeds? Dispersal of seeds is that seeds are spread to far off distances or away from the plant which produces the seeds. Because the aim of the dispersal of the seeds is that the seeds are dispersed to far off places so that plant propagation occurs to wider distances. The seeds falling directly under the mother plant have to germinate and develop under limited food supply and space. Because under the mother plant, there is limited space, there is limited nutrition. The seeds need to be scattered to far off places so that future plants can become healthy plants. They do not have competition for space, they do not have competition for food, etc. And to overcome this problem that seeds do not fall near the mother plant, the fruits and seeds have developed several special devices. इनमें बहुत सारी ऐसी devices है that can help the seeds to move to far off places, to disperse to far off places, so that there is widespread dispersal of seeds for good reproduction. Now, the natural agents which can disperse the seeds are, there can be natural agents like wind, water, animals, and even there is the mechanism of dehiscence in some fruits. कुछ fruits में dehiscence का mechanism होता है. यानी a proper mechanism is there how the fruits disperse, how the seeds disperse, how the fruits rupture, mature fruits rupture, and the seeds are released. And this mechanism helps the seeds and fruits to disperse from one place to another place and even to long distances. When the wind is the dispersal agent, the dispersal of seeds is called anemochory. Anemochory is dispersal of seeds by the wind. In some species where the seeds are of light weight, यहाँ पे seeds का weight बहुत कम होता है, or they have some accessory part to help the dissemination of the seeds. Seeds के साथ कोई accessory part होता है. For example, it can be a wing of the seed, etc. And the seeds are dispersed by the air currents, like by the wind. The seeds are, for example, drumstick, cinchona, fruits of yam, maple, etc. They have appendages in the form of thin, flat membranous wings, which help them to float in the air and are carried out to long distances. इसी तरह members of Asteraceae में जो कैलेकस है हमने बहुत बार पढ़ा, it is modified into hair-like structure जिसको हमने पैपस कहा, and you have seen the पैपस जब हम कैलेकस के different types पढ़ रहे थे, and that calyx help us in the dispersal of seeds. They persist along with the fruit and they open like umbrella. The seeds float in the air and disperse to far off places. इसी तरह पॉपी एंड प्रिकली पॉपी में, प्रिकली पॉपी को अर्जुमोन भी कहते हैं, जो फ्रूट्स है दे डिस्पर्स. फ्रूट्स यहाँ पे फ्रूट्स की डिhiscence होती है, दैट इज द मैच्योर फ्रूट्स रप्चर एंड सीड्स आर थ्रोन आउट टू ए डिस्टेंस away from the parent plant. This mechanism is called sensor mechanism. Now we have seeds of calotropis, elastonia, cotton. They are provided with hair and covered with sufficient this hair along with these seeds, attached with these seeds helps the seeds to disperse to long distances. Seeds of orchids and some grasses, they are very small and they have very light weight. They can be easily carried
by the wind to far off places. इसी तरह fruit of physalis में there is swollen persistent calyx, यानी calyx इनमें persistent रहती है even after the formation of fruit. This part of the flower, that is calyx, it becomes swollen and remains there, and by this fruit can easily be carried out by the air. Some plants like Chenopodium, Amaranthus, etc., they are uprooted after drying and carried away by the wind, and these seeds are then distantly dispersed. These plants are known as tumbleweed. Now we have, when the dispersal occurs by the water, the mechanism is called hydrochory. Hydrochory में क्या है? The fruit and the seeds have special devices which may help them to float in the water, or dispersed by the water. For example, the tissue can be spongy, it can be fibrous. For example, in coconut, there is spongy thalamus in this lotus, and इसी तरह small seeds with airy adult as in water lily. They float easily in water and are carried out to long distances along with the water currents. यहाँ पर ये agents है for the dispersal through the water, and the dispersal through the water is called hydrochory. और ये कौन से agents है? Like the seeds become lightweight, they can float on the water, they have spongy tissue. You see, these are the agents that can help the seeds to disperse by the water currents. Now, when the dispersal agent is the animal, that is the dispersal of seeds by animals, इसको जूकोरी कहते हैं. The fruits and seeds, इनको hooks होते हैं, spines होते हैं, bristles होते हैं, sit here, and when animals walk through those places where these fruits and seeds are, they get attached to the animals, and animals then, by moving from one place to another place, they carry these seeds and fruits along with them and disperse them to far off places. For example, fruit of xanthium arena, they have curved hooks. यहाँ पे hooks, curved hooks बनते हैं agents of dispersal. इसी तरह superior grass, it has a bunch of stiff, that stiff will help it disperse. इसी तरह tribulus has sharp and rigid spines. Boyer havia में it has sticky hair. Martinia has two curved hooks. Edible fruits like guava, grape, fig, plum, they are dispersed by birds. यहाँ पे fruit एक ब्यूटीफुल फ्रूट, एक टेस्टी फ्रूट, एक कलर्ड फ्रूट ही एक एजेंट बनता है. यहाँ पर फ्रूट ही एक लालच देता है. इट बिकम्स एन अट्रैक्टिव फीचर फॉर द फ्रूट टू बी डिस्पर्स्ड बाय द बर्ड्स एंड इवन ह्यूमन बीइंग्स. And these fruits which are eaten by the animals, which are eaten by the human beings, the seeds are then passed undigested along with the fecal matter, and thus the dispersal of seeds occurs. Now we have mechanism of dispersal of seeds in some plants. These specialized structures, organs, substances, and adaptations which protected the plant from destroying by animals, insects, and diseases. These constitute the defense mechanism in the plants. ये हमारा सिलेबस में नहीं है, हाउ प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, लेकिन यो आप एक सरसरी नज़र इस पे डालिए कि प्लांट्स में दीज आर द डिफेंस मैकेनिज्म्स, हाउ दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. एपिडर्मिस है. और मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, आप तब तक अटेंडेंस करेंगे. ट्राइकोमस होते हैं, हियर्स, लेट्सपर्स ग्लैंड्स, डक्ट्स, सिक्रेटरी ग्लैंड्स, टेस्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट पॉट्स. इतना आया समझ जो अभी पढ़ा? शैल आई रिपीट इट? मैं इसको रिपीट करूं? नो सर. विद नो दिस, सर, समझ आया. हाँ समझ आया. विद दिस हमने बहुत सारे तकरीबन तकरीबन सिलेबस
कंप्लीट किया। अब कुछ टॉपिक्स है। एक बारक है। दूसरा क्या बताया था? बारक, ब्रांचिंग सिस्टम, ब्रांचिंग सिस्टम। तीसरा क्या है? ब्रांचिंग पैटर्न। पेरियांथ, पेरियांथ। टाइप्स ऑफ वेरिएंट। हाँ, मैं ये पेजेस आपको डालूंगा ये इसमें ग्रुप में। आप ये नेक। खुद पढ़ेंगे। लॉन्गेस्ट इन्फ्लोरेसन्स, लॉन्गेस्ट स्टाइल, नेशनल फ्लावर कौन सा है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी, नेशनल फ्रूट कौन सा है, लार्जेस्ट फ्रूट कौन सा है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है। आई विल शेयर। हमारे पास कुछ मिनट रह गए। आपके साथ में एक और एक चीज शेयर करूंगा। यू वेट फॉर सम मिनट्स। कितने मिनट रह गए हमारे पास? स्क्रीन आया? स्क्रीन है विजिबल? यस सर। हाँ। फ्लावर मॉर्फोलॉजी। आप सिर्फ इन पे देखिए। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स। इट इज ए मॉडिफाइड डिटर्मिनेट शूट जहाँ पे स्पोरोफिल्स है। स्पोरोफिल्स यहाँ पे स्टेमनस एंड कार्पल्स, क्योंकि ये दोनों स्पोरोफिल है। स्टेमनस में माइक्रोस्पोर बनता है, कार्पल में मेगास्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर बिकम्स द पोलन ग्रेन, और कार्पल में जो मेगास्पोर है दैट फॉर्म्स द एम्ब्रियो सैक। फ्रूट, दिस फ्लावर इट कैन हैव आउटर मॉडिफाइड लीव्स जिसको हम पेरियांथ कहते हैं। ये सॉरी पढ़ सिर्फ आप देखिए। दिस इज ए टिपिकल फ्लावर। यहाँ पे आप सारी चीजें देखिए। इट इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन द फ्लावर। दिस इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर विच इज कॉल्ड अ पेडिसल। और दिस इज द रिसेप्टैकल। वो एंड, वो पलेट लाइक स्ट्रक्चर और एंड ऑफ द दिस पेडिसल, पोस्टीरियर एंड, जिस पे देयर इज इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। यहाँ पे बाहर वाला पार्ट, दिस इज द कैलेकस। कैलेकस में एक सेपल है। देन वी हैव दिस अंदर वाला पार्ट, दिस इज द कोरोला। इसके बाद स्टेमनस, दीज आर स्टेमनस, दिस इज द एंड्रोशियम, एंड दिस इज द कार्पल। कार्पल में दीज ओव्यूल्स, दे आर द structures that form the future seeds. This is a perfect bisexual flower. समझ आ रहा है? This is a perfect bisexual। फ्लावर। यहाँ पे आउटर वर्ल एंड इनर वर्ल, इनको यूजुअली हम कहते हैं पेरियांथ। बट व्हेन देयर इजंट a differentiation between sepals and petals, they constitute a single whorl, then that is the true perianth. But these two whorls are collectively called a perianth, and petals and sepals they form the perianth, and they are the accessory whorls. Why these are accessory whorls? Because they do not have the direct role in रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आप सारी चीजें देखेंगे कि एक फ्लावर में कंप्लीट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में, इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर क्यों कहते हैं? बिकॉज हियर वी हैव बोथ सेक्सेस। टू सेक्शन। हाँ, एक तो है अंदर वाला गाइनोशियम कार्पल। हियर इट इज सिंगल कार्पल। कार्पल में पार्ट्स है। ऊपर वाला इट इज स्टिग्मा, इट इज स्टाइल, एंड नीचे बेसल वाला swollen पोर्शन, इट इज द आवरी, एंड इन दिस आवरी देयर आर ovules. This ovary contains ovules, and this ovary ripens into fruit, and these ovules become seeds. So seeds are enclosed in the ovary,
For this reason, these plants wherein the seeds are enclosed in vessel-like structure are called angiosperms. So, flower being the unique feature of the angiosperms. Except angiosperms, nowhere is produced in the plant kingdom. Be it bryophyte, pteridophyte, or gymnosperm, in those plant groups, flowers are not produced. It is only the angiosperm while flowers are produced. क्योंकि angiosperms का नाम भी ही है इसी बुनियाद पर कि एंजियोस मीन्स वेसल एंड स्पर्म मीन्स सीड सीड्स आर एनक्लोज्ड इन वेसल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टेमन्स में स्टेमन का एक फिलामेंट होता है एंड एट द टॉप देयर इज द एंथर एंथर्स में इट इज द एक्चुअली एंथर विच जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन्स बनते हैं दिस इज द फ्लावर अटैचमेंट यहाँ पे फ्लावर अटैचमेंट बेस्ड ऑन वेदर फ्लावर हैज द स्टॉक फ्लावर को है स्टॉक जिससे अटैच होता है ऑन द ब्रांच दोज फ्लावर्स आर कॉल्ड वेयर फ्लावर्स हैव स्टॉक ऐसे फ्लावर्स को क्या कहते हैं Pedicellate. एंड वी हैव फ्लावर्स जहाँ पे स्टॉक नहीं होता है जहाँ पर फ्लावर का पेडिसल नहीं होता है इनको सिसाइल फ्लावर्स कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेक्स ऑफ फ्लावर we can have perfect bisexual flower wherein there are androecium and gynoecium that is staminous and carpellus and we have flowers which can be male only for example this flower यहाँ पे आप देख सकते हैं this is the flower इसमें only staminous है and this is the female flower इसको स्टेमिनेट फ्लावर भी कहते हैं एंड इन दिस फ्लावर देयर इज ओनली कार्पल इसको पिस्टलेट फ्लावर कहते हैं सो बोथ दीज फ्लावर्स वेदर इट इज पिस्टलेट फ्लावर और इट इज स्टेमिनेट फ्लावर दे आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या कहते हैं इनको Unisexual flowers. This is the plant sex. On the basis of plant sex, we can have plants with either flowers having both sexes, plants with either flowers having one sex. And when there is a plant, एक plant में some flowers are male, कुछ flowers एक plant में male होते हैं, for M for male, and some flowers are female. Such flowers are called such plants are called Flower. monoecious. Yani some Monoecious. flowers are male and some are female. Mono means one, osseous from okias, okias means house. That is a plant wherein some flowers are male and some flowers are female. On the other hand, we have some plants जहाँ पे plant as a whole एक plant में सारे flowers या male होंगे या एक प्लांट में सारे फीमेल फ्लावर्स फीमेल होंगे सो दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड वेयर प्लांट एज ए होल इज आइदर मेल और प्लांट एज ए होल इज आइदर फीमेल such kinds of plants are called dioecious plants Di- di means two Aetius from okias okias means house that is where uh, in one house lives male and in another house lives female. That is the for sexual reproduction. There are two houses. One house that is one plant is male, the other plant is female. This condition is called dioecious and the plants are called dioecious plants. Now, ये वाला आया समझ यस सर कल आप सारे लोग ये अटेंड करेंगे लेक्चर कल हम तकरीबन तकरीबन उसके बाद फिर दो लेक्चर लगेंगे टोटल बस सी दिस फ्लावर दिस स्लाइड यहाँ पे क्या है ऊपर सिमेट्री सिमेट्री हमने क्लास में भी पढ़ी थी